IC26 Life Insurance Finance. This course is designed for the IC26 paper conducted by the Insurance Institute of India, Mumbai. So let us start. The whole book, this book IC26, can be divided into 4 parts. First is bookkeeping and accountancy, then final accounts, profit and loss account, balance sheet, then life insurance terminology, life insurance accounting, ULIP entries. This is first part. Then second part is analysis of accounts, depreciation, bank reconciliation, cash flow statement, ratio analysis. Then part 3 is taxation, and part 4 is accounting standards, financial reporting, investments, budget, and other theoretical chapters. We will cover the whole syllabus, particularly the practical part, and then some instructions about how to prepare the fourth part, theoretical part. Now further we will come to meaning of accounting. What accounting means. Accounting means to keep a systematic record of financial transactions of a business, to keep systematic record of monetary transactions of a business. The record is kept in a systematic way, which is called double entry bookkeeping system. Second is of monetary transactions only. In accounting, we are concerned with monetary transactions where money is coming or going, and monetary transactions are involved. Only those transactions are coming in the purview of accounting. Then of a business, हम business के accounting कर रहे हैं, ना कि it is separate from his personal records. Business is a separate entity from the personal assets or personal belongings of the owner. Then, as I have already told, the accounts are kept on double entry bookkeeping system. What it means? It means whenever a transaction takes place in the business, we immediately bifurcate into 2 parts, one debit and the other credit. वो कैसे करते हैं वो क्वेश्चन में देखेंगे. अभी आपको इतना ही समझना है कि हर ट्रांजैक्शन को, हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. उसके 3 रूल हैं. अभी तो आपको रूल रिमेंबर करने हैं, एंड जब आप क्वेश्चन करने बाद में इट विल ऑटोमेटिकली यू विल नो दिस थिंग्स. First is debit, what comes in, credit, what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So these are 3 rules. Any rules debit and other rules credit can be taken. So how the accounting entry is passed, we will see now. You can open page. These rules are given on page 5. You can just note down of the book. Please keep the book ready with you and one paper and pen ready with you for noting down, and also book IC26 with you. Rules are given on page 5. Now come to page 21. Here an example is given. How to make an entry, debit credit entry, which is called journal entry, or to prepare a journal. When we write debit and credit, it is called a journal or journal entry. We will just see page 21. First entry is Kapoor commenced business with cash of rupees 5,000. कपूर ने 5,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया. नया बिजनेस स्टार्ट है, वो 5,000 रुपये लेके आ गया.
So what will be the accounting entry in the form of debit credit? Of course, कैश हमारे पास आ गया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे से कुछ गया तो है नहीं, नथिंग गोज आउट, सो वी विल राइट नेम ऑफ द गिवर, कपूर अकाउंट क्रेडिट. So cash comes in, Kapoor is the giver. So this will be the complete entry. Purchased bags of 500 bags of cement for 2000. हमने 2000 रुपये का सीमेंट खरीद लिया. सीमेंट क्या है? उसके गुड्स हैं जिसमें वो डील कर रहा है, तो इसको हम गुड्स, अकाउंटिंग सेंस जिन आइटम्स में वो डील कर रहा है उसको हम कहते हैं गुड्स. सो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारे पास आ गई. एंड अगर कैश पेमेंट की है तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट. अगर चेक से पेमेंट की है, बैंक अकाउंट क्रेडिट. अगर उधार से पेमेंट है, अभी पेमेंट नहीं किया, तो उसका नाम आएगा इंडिया सीमेंट इज द गिवर. गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट और इंडिया सीमेंट अकाउंट क्रेडिट. सो इट मीन्स any transaction can take place in three ways, either through cash or check or on credit. Let us see the next entry. Sold 300 bags of cement. 300 बैग हमने बेच दिए. सो गुड्स हमारे से चली गई, गुड्स अकाउंट क्रेडिट. आया क्या हमारे पास? कैश आ गया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट. अगर बैंक में पैसा आ गया हमारे, चेक है. और अगर उधार पे हमने बेचा है, देन पाल कंस्ट्रक्शन, जो भी उसका नाम है, दैट विल बी डेबिट. रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वट गोज आउट, गुड्स हमारे से चली गई. नेक्स्ट है, हमने इंडिया सीमेंट को 1200 रुपये की पेमेंट की. पेड इंडिया सीमेंट 1200 रुपीज़. दिस सिंपल एंट्री, इंडिया सीमेंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. अगर चेक दिया है, अगर कैश दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट. इंडिया सीमेंट डेबिट, इंडिया सीमेंट इज द रिसीवर, देन बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट इज क्रेडिट. रिसीव्ड कैश ₹1400 फ्रॉम पाल कंस्ट्रक्शन कंपनी. सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, पाल कंस्ट्रक्शन क्रेडिट. कैश आ गया, पाल कंस्ट्रक्शन इज द गिवर. Then again a sales entry, same entry as third one. The next entry is paid sundry expenses 120 रुपीज़. 120 रुपये हमने कोई खर्चा किया है, कोई एक्सपेंसेस किए हैं. सन्ड्री मीन्स टोटल एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हमने एक्सपेंसेस कर दिए. क्रेडिट, कैश अगर कैश से किया, चेक से किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. सो दिस debit and credit form of writing is called journal entry. It is prepared day wise. Let us see some more points. You can open page 144 and 145. Paid up value. Those who are working in life insurance know the meaning of paid up value, but those who are from general insurance industry, they can just understand this concept here. Paid up value policy का meaning ये है कि if any policy has run for at least 3 years, it acquires paid up value. That is policy for a reduced amount of sum assured continues to be in force. इसका मीनिंग ये है, लेट अस से एक पॉलिसी 2 लाख रुपए की है, सम assured है 2 लाख रुपीज़, एंड इट्स टर्म इज 20 years. After 10 years, let us say the policyholder doesn't pay any premium, then we can calculate its paid up value as 2 lakh divided by 20 into 10, that is 1 lakh. So this policy will now be converted as policy for sum assured of rupees 1 lakh. So its paid up value is 1 lakh. So paid up policy will continue to be in force even if the premiums after 10 years are not paid. Then actuarial valuation. We have now how to prepare for the examination. Apart from listening to these audio sessions, what you are to do, number 1,
You have to go through the summary of all the chapters given at the end of each chapter. There is a summary or learning outcome given at the end of each chapter. You have to go through it. There are few questions given at the end of each chapter, test questions and self-examination questions. You can go through these questions. These three things will be sufficient for you to prepare for the examination. Audio sessions plus summary plus self-examination questions given at the end plus practice questions which we will do in live sessions. So this will be sufficient for you to prepare for the examination.